टाटा गोल्ड ETF प्लीज। देखो दोस्तों, मैं तो इंडिविजुअल स्टॉक नहीं देखता, लेकिन आपके लिए मैं देख सकता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो ना, तो आप इसमें बैठे रहो, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, ठीक है? अगर आप 1 साल तक इसको होल्ड कर सकते हो, तभी इसमें बने रहो। वरना हफ्ते महीना के अगर खिलाड़ी हो तो आप इसमें जितना हाई लगाए ना आज, इतना काफ़ी है, निकल जाओ।
ऑलरेडी मतलब सस्टेन, दैट्स गुड है ना? नहीं, एक बार भी फिज़ल आउट सस्टेन कर रहा है और अब आपको एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस मिल गया 23,828 का, जो फर्स्ट आवर का लो है। अगर आपके अब जो एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस में जो बचे हुए हैं, उनके लिए वो आपका स्टॉप बहुत सिंपल है, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद चलिए पॉलिसी कवरेज की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, और हमारे साथ धर्मेश जी, सचिन जी, राजेश जी और मानस जी इस पैनल से कंटिन्यू करेंगे। बाकी सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अदिति, मैं 2-3 चीज़ें देखना चाहूँगा। एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट में आरबीआई और क्या करता है? आई थिंक थोड़ा और आई थिंक कम्युनिकेशन आएगा। दूसरा, जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं रूपी को लेके, जो एनडीएफ मार्केट में लिए, वो सारी स्टेप्स जो है वो शॉर्ट टर्म है। इनफ्लो जो आना है भारत में, वो एक बड़ा इश्यू है। फॉरेन कैपिटल जो आउटफ्लो हुआ है, वो एक बड़ा कारण रहा है रूपी पे प्रेशर पे। ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस, अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर से हालात एकदम बदल गए हैं। पश्चिमी एशिया में शांति से बाजार में जोरदार तेजी है। क्रूड भी 14% फिसल कर $95 के नीचे आया है, जिससे एनर्जी संकट और महंगाई बढ़ने का रिस्क घटा है। डॉलर की नरमी से रुपए को भी कुछ राहत मिली है। ऐसी सूरत में आरबीआई का क्या रुख होगा? क्या आरबीआई कुछ कमेंट्री देगा आगे के लिए? अ, ये वित्त मंत्री पहले संकेत दे चुके हैं कि आरबीआई के पास रेट कट करने की गुंजाइश है। क्या शांति के इस प्रस्ताव के बाद गवर्नर उस बात को एंडोर्स कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? इन सब पर चर्चा होगी। इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट और मार्केट एनालिस्ट का एक बड़ा पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और साथ ही आपको आशीष भी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दिखा दीजिए हमारे पैनल को प्लीज़, और आशीष को भी। आशीष, गुड मॉर्निंग। और आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी की शुरुआत हो रही है। और चलिए हमारे साथ इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ डेट दीपक अग्रवाल, और आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज जुड़े हैं। और क्रिसिल के सीनियर इकोनॉमिस्ट और चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी, और बाकी लोग साथ ही साथ जुड़ते जाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष। बिल्कुल गजब दिन है। पिछली पॉलिसी 2 महीने पहले और इस पॉलिसी के बीच में किस तरह का बदलाव? तो ये छोड़िए, आवास की एमपीसी और आरबीआई की एमपीसी 2 दिनों में किस तरह का बदलाव होता हुआ? अदिति से चर्चा हो रही थी उस एमपीसी में आवास की। दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्टांस में कोई बदलाव नहीं, कमेंट्री का इंतजार रहेगा। अदिति, पहला सवाल तो यही, कमेंट्री में किस चीज का इंतजार होगा? क्या वॉच आउट करोगे आप? देखिए, एक तो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा-सा कॉशन आएगा कमेंट्री में, और वॉच आउट आप क्लियरली ये होगा कि जिस तरह से ये सिनेरियो ओवरनाइट बदला है, उसके बाद किस तरह का सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट और जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट एमपीसी की तरफ से आता है। आज नए सीरीज़ के पहले फोरकास्ट्स होंगे एमपीसी की तरफ से, तो ये एक हम इंडिकेशन लेंगे कि नया बेसलाइन क्या है, व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल दैट वी नीड टू लुक एट फॉर एफवाई 27। उसके आगे अगर कोई हिंट आती है बॉन्ड यील्ड्स की तरफ, आईएनआर की तरफ, दोनों ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है, तो ये भी हम क्लोज़ली वॉच करेंगे। मेरे हिसाब से अभी भी जो टोन होगी वो बहुत ही बैलेंस्ड होगी, डेटा और डेवलपमेंट बेस्ड आगे का जो रुख है, इस पे सेटल्ड होगा बेसिकली। चलिए दीपक अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। और देखिए, मार्केट की स्थिति पिछले 3 दिनों में पूरी पलट चुकी है। चाहे आप डॉलर रुपये देखें, चाहे आप बॉन्ड मार्केट देखें। जो पैनिक सिचुएशन थी उससे तो हम ऑलरेडी काफ़ी रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि एमपीसी की 3 दिन की बैठक थी, पहले 2 दिन तो उनके लिए समीकरण अलग थे। आज सुबह समीकरण बदले हैं। आप क्या मान रहे हैं? मनी मार्केट क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रही गुड मॉर्निंग। और अमित, मैं आपसे सहमत हूँ कि पॉलिसी तो लग रहा है कि जैसे साइड शो जैसे है, बिकॉज सीज फायर 15 दिन की जो सीज फायर अनाउंस हुई, लेकिन ये बॉन्ड मार्केट में बेसिकली रुपी डेप्रिसिएशन होने के कारण मार्केट
ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं आरबीआई रेट बढ़ाने पे रुपये को डिफेंड करने के लिए, बट वो एक्सपेक्टेशन लास्ट 2-3 दिनों में बाजार में अनवाइंड हुई है और आज सुबह भी हमने देखा है तो वो पोजीशन जो है वो अनवाइंड हो चुकी है। सो बाजार में 2 चीज़ थी, एक थी कि किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ये पॉलिसी में कोई आरबीआई रेट एक्शन लेने वाला है, आरबीआई अपनी स्टांस पे न्यूट्रल रखने वाला है। यस, जैसे अदिति ने कहा कि इन्फ्लेशन ये एफआई 27 के लिए न्यू सीरीज के हिसाब से शायद आरबीआई 4 का 4.5% इंक्रीज कर दे और ग्रोथ को थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज कर दे। सो आरबीआई की कमेंट्री प्रोबली के राइट नाउ आरबीआई इज विलिंग टू लिव विद हायर इन्फ्लेशन फॉर द टाइम बीइंग, और अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई इज आल्सो विलिंग टू एक्ट। तो ये कमेंट्री की उम्मीद थी ये पॉलिसी में, बट आज लास्ट 2 दिनों में जो हमने अपॉइंट देखा है उससे मार्केट में भले ही पॉलिसी एक्शन की उम्मीद कंफाइंड हुई है, बट आरबीआई की तरफ से हमें लगता है कि प्रोबली message that yes, there are concerns on inflation, but growth side पे भी concern है. So we will be in wait and watch mode, and RBI will continue with the interest rates. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं स्टेटस को ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आज कुछ कूल ऑफ जरूर होगा सुबह, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स थोड़ा सा तो ज्यादा हॉकिश थे। काफी कुछ प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे थे, वो डिस्टॉर्शन था। मैं आऊंगा कि या तो बॉन्ड मार्केट ओवरशूट कर गए अपने आप को। इस पे बातचीत बाद में, पहले फिरोज अजीज साहब के पास चला जाए, आनंद राठी वेल्थ की। फिरोज, आनंद राठी वेल्थ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई साहब, और मार्केट्स क्या मान के चल रहे हैं? सर, मैं तो ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट हम वो देखते हैं कि भाई लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस आरबीआई पॉलिसी के आधार पे मैं तो ये मानूंगा कि रेट कट की गुंजाइश नहीं है। वेट एंड वॉच का स्टांस होगा जो लास्ट टाइम भी लिया गया था। स्पेशली अगर आप देखते हो तो शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो 3 महीने का 15 दिन का पैसा था मार्केट में वो रेपो से कम ट्रेड कर रहा था। अब वो रेपो से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, तो ट्रांसमिशन जिसकी बात की थी फरवरी की एमपीसी में, वो ट्रांसमिशन होता दिख रहा है। और लिक्विडिटी पहले ज्यादा ही थी लिक्विडिटी, अब वो न्यूट्रल टाइप आ गई है। तो हेडलाइन में कुछ ज्यादा It's 10 o'clock. टाइटनिंग हुई है बियॉन्ड द हेडलाइन, दैट्स वन। और उसका पैरामीटर क्या होता है? उसका पैरामीटर ये होता है कि भाई रेपो से कितना इर्द गिर्द घूम रहा है 15 दिन महीने दिन का पैसा इन टर्म्स ऑफ द रेट्स ऑफ 15 डेज एंड 1 मंथ। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, दूसरा ट्रांसमिशन का एक पैरामीटर होता है डेरिवेटिव इंडिकेटर। डेरिवेटिव में दिसंबर की सिंथेटिक फ्यूचर्स कितने प्रीमियम पे कोट कर रही है? 7.7 की प्रीमियम पे कोट कर रही है। इसका ये मतलब है कि कोई भी पुट एंड कॉल दिसंबर का आप लेंगे तो उससे आप एक सिंथेटिक की प्रीमियम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उसमें अभी भी ट्रांसमिशन की गुंजाइश है। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, आप ही के शुभ Welcome you all to the first policy of this financial year. At a time when the global economy is facing unprecedented challenges, from heightened geopolitical tensions, the conflict in West Asia, for which a temporary ceasefire was announced today, and the disruption in global supply chains. Before the outbreak of the West Asia conflict, India's macroeconomic fundamentals exuded confidence. With buoyant growth and low inflation, conditions, however, turned adverse in March with the widening of the conflict zone and its intensification. The fundamentals of the Indian economy are on a stronger footing at the current juncture than it was in previous crisis episodes, as well as relative to many other economies, providing it with greater resilience to withstand shocks. Global growth faces increasing downside risks as the sharp rise in energy prices and shortages, some of which we saw a correction today in the prices of energy, and shortages of inputs for various industries have stoked inflation fears and pushed up the geopolitical risk premium in the oil markets. Heightened uncertainty precipitated by the ongoing conflict is weighing on the outlook. Safe haven flows have exerted depreciation pressure on currencies of major economies,
as the US dollar strengthened, while commodity prices such as of metal and gold have moderated. Financial markets have become more volatile. Equities registered a broad-based correction. Sovereign bond yields, already elevated due to long-run fiscal sustainability concerns, driven by inflation fears, have hardened across major economies. I now come to the decision of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th, and briefly today in the morning of April to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly state the rationale for these decisions of the MPC. The MPC noted that since the last policy meeting, geopolitical uncertainties have heightened significantly. Headline inflation remains contained and below the target. However, upside risks to the inflation outlook, driven by increased energy prices, pressures, and probable weather disturbances affecting food prices, have increased. Core inflation pressures remain muted, although supply chain dislocations and the risk of second round effects render the future inflation trajectory uncertain. The MPC further noted that high frequency indicators till February of this year suggest the continuation of strong momentum in economic activity. Growth impulses continue to be supported by robust private consumption and investment demand. However, the West Asia conflict is likely to impede this growth. Higher input costs associated with increase in energy prices and international freight and insurance costs, along with supply chain disruptions that could constrain availability of key inputs for downstream sectors, would impair growth. The government has taken several measures targeted at supporting exports and protecting supply chains. This should mitigate the adverse impact of the conflict. The NPC opined that the intensity and the duration of the conflict, as well as the resultant damage to the energy and other infrastructure, add risk to the inflation and growth outlooks. However, the fundamentals of the Indian economy are on a stronger footing, providing it with greater resilience to withstand shocks now than in the past. It also noted that the economy is confronted with a supply shock. It felt, therefore, prudent to wait and watch the changing circumstances and the evolving growth inflation outlook. Accordingly, the NPC voted to keep the policy repo rate unchanged, even as it remains vigilant, closely monitoring incoming information and assessing the balance of risks. The NPC also decided to continue with a neutral stance, retaining the flexibility to respond judiciously to incoming information. Before I provide an assessment of growth and inflation now, let me briefly elucidate on the channels of transmission through which the Indian economy may get impacted by the ongoing conflict. First and foremost, elevated crude oil prices could increase imported inflation and widen the current account deficit.
Second, disruptions in energy markets, fertilizers, and other commodities may adversely impact industry, agriculture, and services, reducing domestic output. Third, heightened uncertainty, increased risk aversion, and safe haven demand could impact domestic liquidity conditions, economic activity, consumption, and investment. Fourth, weaker global growth prospects may dampen external demand and reduce remittance flows. Finally, adverse spillovers from global financial markets would tighten domestic financial conditions and raise the cost of borrowing, some of which we have already witnessed. Overall, the initial supply shock can potentially transform into a demand shock over the medium term if the restoration of supply chains is delayed. I now come to the assessment of growth. As per the new GDP series, real GDP growth for last year is estimated at 7.6%. This corroborates the underlying strong momentum in economic activity supported by robust consumption and investment. Amidst supportive policy measures, ongoing structural reforms, and favorable financial conditions. Going forward, elevated energy and other commodity prices and also shocks to availability of inputs due to disruptions in the Strait of Hormuz are likely to impact growth this year. The government has, however, been active in ensuring supply of inputs across critical sectors to minimize the impact of supply chain disruptions. On the other hand, sustained momentum in services sector, persisting impact of privatization, which was carried out last year, and the healthy balance sheets of financial institutions and corporates should continue to support economic activity. The agricultural sector's prospects are supported by healthy reservoir levels. Business expectations remain optimistic, and leading indicators point towards continued resilience in manufacturing and services sectors. Moreover, the government's focus on scaling up domestic manufacturing in several strategic and frontier sectors augurs well for India's ensuing growth trajectory. On the demand side, private consumption this year is expected to be supported by discretionary spending. Rural demand remains robust. It should gain further traction on the back of favorable agricultural conditions and a healthy labor market. Urban consumption is likely to strengthen further, aided by the beneficial impact of GST rationalizations and the buoyant services activity. While the government's thrust on infrastructure spending continues, the revival in private sector investment is expected to sustain on the back of high capacity utilization, strong credit growth, and benign financial conditions. On the external front, merchandise exports would be adversely impacted from disruptions to key shipping routes, the concomitant rise in freight and insurance costs, and lower global demand on account of the conflict. However, merchandise exports may benefit from the recent trade agreements, many of which were signed last year, and few of them are now in implementation, and others to become operational hopefully this year. While services exports are expected to remain resilient. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for this year is projected at 6.9%, with Q1 at 6.8, Q2 at 6.6%. Further escalation
and wider spread of the conflict. As of now, of course, we have a ceasefire, heightened volatility in global financial markets, and weather-related events, however, weigh on the domestic growth outlook. Risks to the baseline projections are tilted to the downside, with uncertainty remaining elevated due to the ongoing West Asia conflict. Coming to inflation, in January, February, headline inflation continued to remain below target. It was 2.7% and 3.2%, respectively. With food group recording inflation, it was in deflation mode, as you are aware, in the previous 4 months up to December. Inflation in fuel terms was modest, core inflation at 3.7%, and the underlying price pressures benign, as evident from the much lower core inflation if you exclude precious metals. Turning to the inflation outlook, recent spikes in energy prices due to the conflict have emerged as a risk, although retail prices of petrol and diesel have remained unchanged so far. The pass-through of higher global energy prices has resulted in some price increases in a few other fuel items. Food price outlook remains comfortable in the near term with the robust Rabi production that we had, adequate reservoir levels which would help agricultural activity, and comfortable buffer stocks of food grains. The likely emergence of El Nino conditions could pose a risk. Considering all these factors, CPI inflation this year is projected at 4.6%, with Q1 at 4, Q2 at 4.4, Q3 at 5.2, and then going down in Q4 to 4.7%. Core projection is projected at 4.4%. We are doing this for the first time, as has been the demand from quarters. And going forward, we shall continue giving our projections for core inflation too. Excluding precious metals, core inflation is even lower, indicating that underlying inflation pressures are expected to remain contained. The risks are on the upside. I shall now speak about the external sector. Global trade is expected to witness a slowdown in growth during 2026 as compared to 2025. This is due to the lingering tariff-related uncertainties, despite the Supreme Court judgment, ongoing conflict, 0.2% during the 2 months of this year on a year-on-year basis. This was a result of export traction in key markets. Merchandise imports, on the other hand, recorded a double-digit growth of more than 22%. This is largely driven by higher gold imports. As a result, there was a widening of the trade deficit. Expected robustness in services exports and inward remittance receipts during Q4 last year, however, should keep India's current account deficit moderate and within the sustainable level last year. Rising global uncertainties and elevated prices of key energy commodities pose some upside risks to India's current account deficit this year. The recent bilateral and regional trade agreements with major trading partners are expected to boost India's trade and investment opportunities, while at the same time, they will also widen and diversify India's trading partners and integrate India into global value chains. On the external financing front, gross FDI witnessed a strong growth, almost about 20%,
Nifty also showed improvement on a small base of last year. India remains an attractive destination for greenfield FDI projects. FPI to India, driven by outflows, primarily in the equity segment, recorded net outflows of $16.5 billion last year. And even this year, till we have data till April 6, there were outflows of more than $5 billion. Flows under ECB and non-resident deposits too moderated as compared to last year, last year. And as on April 3, for which we have data, latest data till April 3, India's foreign exchange reserves stood at a healthy $697.1 billion. These are adequate in terms of the standard metrics of reserve adequacy, whether one sees it from the perspective of import cover, we have about 11 months, as has been the case for some time, or whether one looks at it from the perspective of external debt. Overall, therefore, India's external sector indicators remain favorable. Nonetheless, elevated global geopolitical, trade, investment uncertainties require a continuous vigil of the evolving developments. Despite stronger macroeconomic fundamentals, the Indian rupee in the last financial year depreciated more than the average in the previous years. In this regard, let me reiterate, I've said it many times, our exchange rate policy remains unchanged. Specifically, intervention in the foreign exchange market is aimed at smoothing excessive and disruptive volatility without targeting any specific level or band of price for the exchange rate. This is consistent with our long-standing policy of exchange rates being market determined. We in the RBI stand committed to this policy and would judiciously continue to contain excessive or disruptive volatility to ensure that self-fulfilling expectations do not exacerbate currency movements beyond what is warranted by fundamentals. I shall now be speaking on the liquidity and the financial market conditions. System liquidity, as measured by the net position under the LAF, stood at an average daily surplus of 2.3 lakh crore rupees since the last MPC meeting. The Walker since then has traded in the lower half of the corridor, except towards end March, which is an yearly phenomenon. Short-term money market trades, especially those of CPs and CDs, commercial paper and certificates of deposit, they remained elevated. GSEC yields remained largely range-bound with a softening bias in February. But thereafter, on account of the ongoing conflict, they hardened, as did the global yields, along with the rise in the energy prices. Transmission in the credit market has remained satisfactory. To ensure sufficient liquidity in the banking system, the Reserve Bank proactively undertook durable and transient liquidity measures. Going ahead, we will continue to be proactive and preemptive in liquidity management and ensure sufficient liquidity in the banking system to meet the productive requirements of the economy. As for the financial parameters of the banks and the NBFCs, let me inform all of you that the parameters related to capital adequacy, liquidity, asset quality, and profitability
of the scheduled commercial banks continue to remain healthy. Similarly, the system level parameters of NBFCs too are sound, with adequate capital and improved GNPA ratios. As per the latest available data, credit from all sources, not only bank but also non-bank and others, grew at 14.3% YOY. This is in comparison to the 11.7% growth that was witnessed a year ago. Bank credit growth too maintained its upward trajectory. You are aware it had gone down to about 9% in mid 2025. Moreover, it has remained broad based. I shall now, as has been the practice, announce some measures related to some additional measures. They relate to ease of doing business, capital adequacy for banks, and market developments for one of the segments. I have three measures for promoting ease of doing business. First, to facilitate better utilization of bank board's time. This has been a request from the banks. We have done a comprehensive review of all our extra instructions, which are spread over many various directions and regulations. And we propose to now revise and rationalize the matters which require attention of the board. Hopefully, this will result in the board being able to divert more time on policy matters, leaving operational matters to the management. Second, you would recall that we had recently in 2025 done a detailed exercise to consolidate over 9,000 regulatory instructions into 238 master directions. Now, a similar consolidated exercise has been completed for all our supervisory instructions, and we shall be issuing consolidated instructions in this regard. Third, to facilitate ease of doing business by MSMEs, we propose to dispense with the requirement of due diligence while onboarding them on to various trades platforms. For capital adequacy of banks, there are two measures proposed. First, it is proposed to remove the condition regarding NPA provisioning for inclusion of quarterly profits in their CRAR computation. Second, in view of the developments in prudential framework over the years, it is proposed to dispense with the requirement which was laid down a few years ago to maintain an investment fluctuation reserve as an additional buffer to hedge against depreciation in the value of investments. For further development of we have decided to permit certain additional categories of non-bank entities in this market segment. You will be aware only banks and standalone dealers or SPDs are today eligible to participate in this market. We are also enhancing the borrowing limit of the standalone primary dealers in the term money market. To conclude, economic conditions and sentiments have soared after the outbreak of the West Asia conflict. These have adversely impacted the growth inflation outlook. As we stated before, we shall remain vigilant of the evolving situation and put in place policies that prioritize the best interest of the economy. Thank you, Namaskar, and Jai. ओके चलिए, काफी शानदार पॉलिसी मैं कहूंगा, क्योंकि रेट्स में कोई बदलाव नहीं और क्लियरली गवर्नर साहब ने दो तीन चीजें कही शुरू से, अगर आप उन्हें सुन रहे थे तो, कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का फोरकास्ट अप किया गया है, थोड़ा सा ग्रोथ का फोरकास्ट कम किया गया है। हालांकि सीज फायर हुआ है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट, एक सप्लाई साइड प्रेशर
और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो डैमेजेस हुए हैं उनसे जब तक वो रिज्यूम ना हो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। कोर इन्फ्लेशन के पहली बार फुल ईयर के एस्टिमेट दिए गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो FY 27 के लिए 4.6% का इन्फ्लेशन एस्टिमेट है। अपसाइड रिस्क की उन्होंने बात की है, हालांकि Q1 में 4%, Q2 में 4.4%, Q3 में 5.2% और Q4 में 4.4%। जीडीपी की जहां तक बात है, पहले 2 क्वार्टर का जीडीपी का एस्टिमेट कम किया गया। Q1 का 6.8 कर दिया गया वर्सेस 6.9, और Q2 का जो 7% था उसको 6.7% पर लेकर आ गए हैं। FY 27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो भी थोड़ा सा कम किया गया है, 6.9% पर लेकर आए, और FY 26 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.6% के करीब रखा गया। आखिरी में जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है वो बैंकों वाला, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं उसका लिंक इससे तो नहीं है जो अभी रुपी को लेकर उन्होंने जो बैंकों की पोजीशन को लेकर जो उन्होंने बात की थी, कहीं कहीं उससे उसको लिंक तो नहीं किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो एसबीआई जैसे स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे आशीष। लेकिन अब तक ये कुल मिलाकर आरबीआई की पॉलिसी एक काफी सोची और समझी हुई और काफी, एक मैं कहूंगा, सहज पॉलिसी आरबीआई की तरफ से। एक्सपेक्टेड लाइंस वैसे ही हुआ, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं, 5.25% पे रेपो रेट 10 का 10 बरकरार रखा गया है, और यूनानिमसली यानी कि सारे के सारे एलपीसी मेंबर्स ने इसी मत पे इसके साथ ही गए। दूसरी बात, स्टैंड न्यूट्रल का, जैसा आवाज के एलपीसी ने कहा था वैसे ही हुआ। न्यूट्रल का स्टैंड इसीलिए कि फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं, खुला मैदान है, जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से मूव करती हुई आरबीआई नजर आएगी और उसकी एमपीसी नजर आएगी। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस बढ़ाए गए, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस रिड्यूस करेंगे। एमपीसी के आवाज के एमपीसी के 2 मेंबर स्क्रीन पर है, आदित्य नायर और डी के जोशी साहब। एक सवाल था, अच्छा पहले तो सर वेलकम ऑन बोर्ड, तरफ इन्फ्लेशन इंच अप करना और वो एक रिस्क के तौर पे सामने रखना, दूसरी तरफ ग्रोथ, मेरे ख्याल से कई हमारी एमपीसी में और जनरली बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद इस बार नहीं एक आध क्वार्टर का इंतजार करेंगे, लेकिन ग्रोथ में एक मीनिंगफुल लॉक इसी पॉलिसी में सामने आ गया। 6.9% की बात कर रहे हैं FY 27 के लिए। कैसे देखूं, ये हॉकिश है या ये रखोगे अभी भी आप? नहीं, मैं इसको भाई स्टांस तो न्यूट्रल है, पर ये जो पॉलिसी है ये रियलिस्टिक। हाँ, हाँ, तो देखिए ये जो पॉलिसी बनाई जाती है, ये एक बैकड्रॉप जो है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एनर्जी शॉक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आई थिंक ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये एक शॉक बहुत बड़ा है, तो इसका ये ऑलरेडी 40 दिन के आसपास होने वाले हैं, ये प्ले आउट कर चुका है, उसका असर बिल्कुल इकोनॉमी में दिखाई देगा लास्ट क्वार्टर में और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। तो उस वजह से उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े शुरू में थोड़ा सा कम किए, बहुत ज्यादा रिडक्शन की है, बहुत ही फाइन ट्यूनिंग की है उन्होंने डाउनवर्ड की साइड। आई थिंक इस पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गाइडेंस टिपिकली आरबीआई पिछले कई पॉलिसीज में दे रहा था कि रिस्क आर बैलेंस्ड, guidance change हो गया, risk to growth is to the downside and risk to inflation is to the upside। ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि ये एक स्टांस इन्होंने चेंज किया है। और आई थिंक इसके अलावा एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, और जिस वजह से उन्होंने ज्यादा ग्रोथ को बड़ा फाइन ट्यूनिंग यूज किया, वो ये है कि वो जो क्राइसिस ये आया है इसमें जो इकोनॉमी की हालत थी उस समय, वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है, जिस वजह से रेजिलियंस थोड़ा सा आती है। शॉक, जैसा मैंने कहा कि हमारे लार्जेस्ट एनर्जी शॉक ऑन रिकॉर्ड है, तो उसका असर तो आप जितने मर्जी रेजिलियंट हो आगे से पड़ेगा, क्योंकि हम ऑयल पे, इंपोर्टेड ऑयल पे कौन, और एक तरह से पॉली क्राइसिस है, कई चीजों में इसका असर दिखाई दे रहा है। तो आपका लो करंट अकाउंट डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स और अच्छा ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स आपकी मदद करते हैं, पर उसके बावजूद भी ये शॉक इतना बड़ा है कि इसका असर जरूर दिखाई देगा दोनों पे। वो उनकी फोरकास्ट में भी रिफ्लेक्टेड है और वही वो उनके गाइडेंस में भी रिफ्लेक्टेड है। और एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि अभी तक तो ये सप्लाई शॉक है, अगर ये इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जिसकी हमने एमपीसी में भी बात की थी ये बढ़ते हैं, तो इसका ये डिमांड शॉक हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्ट कई चीजों में असर आएगा, इनकम में भी असर आएगा। तो वो स्थिति अभी फिलहाल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी, वो स्थिति फिलहाल नहीं है, ये